Hi students, hope you all are fine and doing well with your studies. So students, I hope you have done very well about memorandum of association, which is very important document as information of a company. And today we are to discuss with the article of association and prospectus, the remaining two very important documents. So first of all, we are to discuss with the articles of association. Articles of association is secondary very important document as far as formation of a company is concerned. This is basically the secondary or subsidiary document in relevance to the memorandum of association. We know very well that memorandum of association, as we have discussed earlier, is that document which tells us about the powers and limits and especially the objectives of a company in which a company has to work. So article of association is supportive document or subsidiary document which contains all the rules and regulations for the internal management of the company. This is subsidiary to the memorandum of association, and that's why it cannot include any power which is excluded by the memorandum of association. Means memorandum of association में जो powers, जो limits एक कंपनी को डिसीजन लेने के लिए निर्धारित की गई हैं, ये उनसे बाहर जाकर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा. इट इज़ जस्ट टेलिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट. So that's why article of association is a supportive or subsidiary document to memorandum of association. According to Companies Act 2013, articles means the articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or of this act. मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आर्टिकल्स का मतलब वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो रूल्स ये रेगुलेशंस हैं कंपनी की जो ओरिजिनली फ्रेम की गई हैं जब से कंपनी को बनाया गया या फिर उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन किए गए फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत हुई, ताकि जो प्रेजेंट कंपनी लॉ को फॉलो कर सके या फिर उससे प्रीवियस किसी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग सजेस्ट किए गए हों. So this is all about article of association. These basically indicate the objectives, how the objectives of the company are to be achieved. So once again I am telling you that memorandum of association tells us about the objectives and articles of association tells us about how to achieve those objectives which are incorporated, which are expressed in memorandum of association, the way in which they are to achieve. So it is not compulsory for a public limited company to file articles, because in absence of article of association पब्लिक कंपनी में यूज टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट मीन्स जो भी रूल्स रेगुलेशंस उसमें दी हुई हैं उनको फॉलो किया जा सकता है. It contains so many things, so many rules, so many important things which include number and value of shares, which type of shares the company is going to issue, कौन से शेयर्स कंपनी इशू करने जा रही है, वो किस तरह के हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फिर उन शेयर्स को इशू कैसे किया जाएगा, उनको अलॉट कैसे किया जाएगा, एंड कॉल्स ऑन शेयर, उनके ऊपर जो कैपिटल का अमाउंट है वो मंगाया कैसे जाएगा. ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स की सेल और परचेज कैसे की जाएगी. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, forfeiture of shares means if shareholder is not able to pay the amount of capital on shares which is due, then company authorities cancels these type of shares, which is known as forfeiture of shares. मीन्स शेयर होल्डर्स जब अपने शेयर्स के ऊपर जो कैपिटल का अमाउंट ड्यू होता है वो नहीं दे पाते, जो उनकी कॉल्स होती हैं वो टाइम पर नहीं दे पाते, तो कंपनी अथॉरिटी कुछ टाइम का नोटिस देने के बाद उनके शेयर्स को कैंसिल कर सकती हैं, एंड कैंसिलेशन ऑफ दो शेयर्स इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स.
इट ऑल्सो इंक्लूड्स अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, कि अगर फ्यूचर में कैपिटल में कुछ परिवर्तन करने के लिए सोचा जाता है, दैट इज़ उसको इंक्रीज करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए, देन इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक है, वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, वो किस तरह से अपने वोट कर सकते हैं, एंड हाउ कैन दे कंडक्ट द मीटिंग्स एंड सेट द रूल्स रिगार्डिंग committees which are set time to time. And it also contains the directors, their appointment way and delegation of powers. Nominee directors, it also has issue of debentures of stock, कैसे किया जाएगा उन्हें, ऑडिट कमेटी कौन होगी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी कौन होगा. इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर्स और स्पेशली कॉमन सील के बारे में भी इसमें मेंशन होता है. रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा, हाउ टू कंडक्ट द जनरल मीटिंग्स, जो कंपनी की जनरल मीटिंग्स अटेंड की जाएंगी या अरेंज की जाएंगी वो कब और कैसे की जाएंगी, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के अरेंज करने का तरीका, एवरीथिंग इज रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू द working of company is basically clearly mentioned in articles of association. So we are very much clear that there is difference between memorandum of association and article of association. And second very important thing to note for you people, that is it is also one of the very important document which is sent to registrar of companies for the purpose of incorporation of a company. So this is about article of association. Now next very important document is basically prospectus. Now what do we mean by prospectus? Prospectus simply means an invitation, any circular, any advertisement which is made by a public company to the public for purchase of shares is known as prospectus. कोई भी किसी तरह का रिटर्न सर्कुलर जिसमें लोगों को शेयर्स को परचेज करने के लिए इनविटेशन भेजा गया है या उन्हें कहा गया है, that is simply known as prospectus. Prospectus is basically issued by a public company because according to Indian Companies Act 2013, no private company can ask the people to purchase or to subscribe for its shares. That's why for a public limited company prospectus is needed, because it has to offer its shares to the public for the sale purposes, because private company has restriction on subscription from public for the purchase of their shares. So only and only a public company can issue prospectus just for the sake of purchasing shares by the shareholders. So it is the prospectus of the company. Now next is difference between memorandum of association and articles of association. We will discuss this difference, and this is really very important question because in this one question we can answer 3 questions simultaneously, because we can write it in details about memorandum of association, and also we can write a detailed note on articles of association as well as the difference itself. So first main difference between memorandum of association and article of association is that memorandum defines the objectives for which the company is formed, whereas articles tells us about the rules of internal management of the company. And the memorandum of association is the main document of the company and is subordinate to the Companies Act, whereas article of association is a subsidiary document and basically it supports both the memorandum of association and the Companies Act. And as far as the necessity for preparation of both these documents is concerned, so the preparation and filing of memorandum of association is compulsory, whereas article of association, it is really not compulsory for a public limited company, because in absence of articles of association it may use table F in which all the contents
all the rules and regulations, necessary rules and regulations are listed clearly. एंड एज फार एज अल्ट्रेशन इज कंसर्न, अल्ट्रेशन मतलब परिवर्तन हम कर सकते हैं उसमें या नहीं. सो इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट, and also if it is feasible then it is quite lengthy process and also requires approval of the government, because without the approval of government no changes, no alteration can be made in memorandum of associations easily. Whereas article of association can be easily altered by passing a special resolution. कंपनी की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये उसमें जो रूल्स हैं उसमें आसानी से कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं. एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज वैलिडिटी. एज फार एज द वैलिडिटी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज कंसर्न्ड, एक्ट basically any acts which are done beyond the scope of memorandum of association are completely invalid. जो भी काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई पावर्स या लिमिट्स के अलावा लिया जाता है या किया जाता है वो बिल्कुल भी किसी भी कारण तरह से लीगल नहीं है, इनवैलिड है, बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाता है. एंड वेयर इज एनी एक्ट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एनी एक्ट डन बियॉन्ड द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स. वो उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं by passing a special resolution. And as far as the relationship in both these documents is concerned, so basically in memorandum of association defines the relationship between company and the outsiders. ये company और company का outsiders के साथ कैसा relationship रहेगा ये उसके बारे में हमें details में बताता है. Whereas article of associations defines the relationship between the members and the management. मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच के रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है. इसीलिए सारी डिटेल जो कंटेंट्स हैं उसमें भी बेसिकली डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनसे रिलेटेड ही जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उन्हें सेट किया जाता है. सो फ्रॉम टुडेज डिस्कशन it is very much clear that what do we mean by article of association, how is it different from memorandum of association, and similarly if we are asked to differentiate between these two important documents then we can differentiate easily on the basis of objectives, position, necessity, alteration, validity, and the last point which we have discussed, relationship, and we had also discussed about prospectus. I hope that you all of you have got it. Thank you. Just take care.